अच्छा जी बच्चों, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इन्वेस्टर रेशोज। इन्वेस्टर रेशोज तीन हैं तादाद में: डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड कवर रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो। हम इन पे सेपरेटली बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड रेशो के मतलब ये क्या होती है और क्या शो करती है। फिर लुक एट द फार्मूला ऑफ द डिविडेंड यील्ड रेशो। द फार्मूला इज डिविडेंड पर शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर आपने कितने पैसे कमाए, डिवाइडेड बाई करंट शेयर प्राइस। The dividend per share is usually not given to us in the question paper. हमें insert के अंदर ही नहीं given होता, तो what we do, we need to calculate it too, and we calculate it by the formula total annual dividends divided by total number of issued shares. अच्छा, अब ये डिविडेंड यील्ड रेशो क्या शो करती है और इसको किस तरह से पेपर हमने परसीव करना है। देखिए, दो बिजनेसेस हैं मिसाल के तौर पे। एक बिजनेस ए है, उसकी जो शेयर प्राइस है वो $10 है, और एक बिजनेस बी है, उसकी जो शेयर प्राइस है वो $20 है। दोनों जो बिजनेसेस हैं वो डिविडेंड पे करते हैं, वो $1 पर शेयर पे करते हैं। जब हम इन दोनों बिजनेसेस की रेशियो निकालेंगे तो वी नो द फार्मूला डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस, 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट इज द आंसर जी? अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 10 बिजनेस ए को परसीव करें तो दैट इज 10%, और अगर बिजनेस बी को परसीव करें तो 5%। इससे हमें पता चला कि वो बिजनेस जिसके शेयर प्राइस की वैल्यू कम थी, यानी लेसर प्राइस पे शेयर अवेलेबल था, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें डिविडेंड यील्ड ज्यादा मिली। इसी बात को टाइम स्पैन में भी देखा जा सकता है। हम कहते हैं कि दो बिजनेसमैन है, एक मोहसिन है जो कि इंटेलिजेंट बिजनेसमैन था, उसने नेस्ले में शेयर बाय किया जब उसकी प्राइस थी $10, और एक बुरहान है, वो जरा लेट इन्वेस्टर है, उसने बाय किया शेयर जब प्राइस हो गई थी $20। अगर दोनों टाइम्स पे कंपनी एक शेयर के ऊपर अपनी जो देती है डिविडेंड वो $1 है, तो इन 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 दिस केस अगेन वो बिजनेसमैन, वो इन्वेस्टर जिसने टाइमली इन्वेस्ट किया था, बिफोर टाइम इन्वेस्ट किया था, $10 पे शेयर बाय किया था, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोअर प्राइस पे शेयर बाय करेंगे तो आपकी डिविडेंड यील्ड रेशो हाई होगी, रिटर्न टू द इन्वेस्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा होगा। लेकिन इसको पेपर में हमने एक और पर्सपेक्टिव में भी देखना है। देखिए, जो हमारी रेशो है ये दो सूरतों में इंक्रीज हो सकती है। एक सिचुएशन तो वो है जब हमारा डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाए तो हमारे आंसर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन वो होगी जब हमारा जो करंट शेयर प्राइस है वो रिड्यूस हो जाए। इन दैट केस टू द in that case too the ratio will increase. In that case too the dividend yield ratio will increase. तो अब जब हम पेपर में देखेंगे तो हमने खाली खुश होना नहीं शुरू कर देना, ओके डिविडेंड यील्ड रेशियो इज हायर, इस केस में मिसाल के तौर पर 10% आ गया तो द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इज गोइंग अप, वो इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। हमने देखना है कि वेदर द शेयर प्राइस, यानी वैल्यू ऑफ द शेयर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। if the dividend yield ratio is increasing because the share price value is falling, this might not be a good sign for example। और हाँ, अगर हमारा डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। उसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो और उसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपना डिविडेंड पर शेयर बढ़ा दिया हो। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का अच्छा होना इज गुड साइन। इसका मतलब है कि द रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज इंक्रीजिंग, बट इट डिपेंड्स बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन द डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इंक्रीजिंग। हमें इसको क्लियरली देखना है। अगर वो इंक्रीज कर रही है मिसाल के तौर पे बिकॉज ऑफ द फॉल इन द शेयर प्राइस, तो फिर हमें देखना है कि फॉल इन द शेयर प्राइस के रीजंस क्या हैं और उसके मुताबिक में ही पेपर में उसको हमने कमेंट करना है। अच्छा जी, दूसरी रेशो इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज डिविडेंड कवर रेशो। डिविडेंड कवर रेशो का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का ये प्रॉफिट है, जाहिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और डिवाइडेड बाय एनुअल डिविडेंड्स। ये रेशो जब निकलती है तो ये क्या शो करती है? दिस रेशो शोज द नंबर ऑफ टाइम्स
business can further pay its dividends. There are two types of businesses, my dear kids. The first type of businesses are that pay all of their dividends to their shareholders and do not keep any retained profit or retained earning for the purpose of future investments. There are second types of businesses who actually pay a lower amount of dividends to their shareholders and keep much of the profit in the form of retained earning for the purpose of future investments. If we calculate this ratio and the answer of this ratio is 9, for example, it means that business can pay its dividends 9 more times during this financial year. It also means that if business has earned $100 profit, business has paid $10 only to the shareholders in the form of dividends, and business has kept $90 profit in the form of retained profit for the purpose of future investments. This implies further that the investors who are interested in the short run earnings will not be happy with this decision because they want to earn short run profit and that's it. But the investors who want to earn long-term profits will be happy with that because they know that business is going to reinvest this amount of money. Business is going to reinvest this amount of money in the future investments and earning a lot of profit in the future. So this ratio is not good or bad in its nature. If the answer of this ratio is 2, for example, it means that business can at least pay twice in a financial year of the total profit that business have. Again, this ratio is not good or bad. If the answer is lower, the short-term investors will be happy with that because they have received most of the dividends. And if the answer is higher, 9, for example, I've written in front of you, the long-term investors will be happy because it means that business has kept most of its profits. The last investor ratio is price earning ratio. Price earning ratio formula is current share price divided by earning per share. Earning per share is not usually given to us and we need to calculate that earning per share too by the formula that is profit after tax divided by total number of shares. Okay. What do we do with that? Current share price and total number of shares. Okay. This ratio shows the trust of the shareholders on the business. Trust of the investors. If the answer of this ratio is higher, for example, 16.7, this shows that the shareholders are ready to invest $16.7 to earn $1 revenue from the business. And if the answer of this ratio is lower, for example, 2.5, it means the trust of the investor is lower as compared to the previous one, and the investors are lesser ready to invest in that. It means they're only ready to invest $2.5 to earn $1 dividend from the company. So these are 3 kinds of ratios that are called investor ratios, and these are the calculations, formulas of these investor ratios. ओके जी बच्चों, हमने रेशियोज पढ़ी और ये हमारे पास पहला सवाल है जो हमने कैलकुलेट करना है. द एग्जामिनर हैज आस्क्ड अस गिवन दिस टेबल 1 so selected data used by shareholders of FFF. टेबल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ अस. हमने सिर्फ इसमें से वैल्यूज को लेना और यूज करना. दिस इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड रेशियो को निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर. और अगर हम डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी नीड 2 थिंग्स, टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जैसा कि मैंने फार्मूला में लिखा. Total dividends are given to you in the column number 2. If you look at that, total dividends that are for 2015, 4.5 million divided by total number of shares. Total number of shares are also given to us in the same
2015 वाला कॉलम है, उसकी लाइन नंबर 4 में, आई गेस, यस, 1 2 3, यस 4 में, दैट आर 20 मिलियन। तो हमने पहले डिविडेंड पर शेयर निकाला और ये हमारे पास निकला 0.225। ओके, जब हमने ये डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया तो अब हमने क्या करना है, डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करनी है। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला ऊपर मैंने लिखा है, डिविडेंड यील्ड रेशियो इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो में सबसे पहले हमें डिविडेंड पर शेयर यूज करना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 0.225 डिवाइडेड बाय, उसमें हमने क्या करना है, करंट शेयर प्राइस लेनी है। करंट शेयर प्राइस इज आल्सो गिवन टू अस इन द थर्ड रो ऑफ द 2015 कॉलम, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारे पास आ गया 2.25%. This is the dividend yield ratio. If we look at the 2014 ratio, that was 2.85. That has been decreased to 2.25%. That is slightly less. Okay. We need to calculate price earning ratio 2. उसको भी जरा हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। Formula for price earning ratio is current share price divided by earning per share. Current share price divided by earning per share. Current share price divided by earning per share. जबकि हमें पता है कि earning per share sometimes हमें given होती है और sometimes नहीं। अभी इसमें देख लेते हैं given नहीं है कि नहीं, लेकिन बहरहाल earning per share का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, profit after tax divided by total number of issued share. PAT stands for profit after tax divided by total shares. ओके, तो पहले हम इसको यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या चीजें मौजूद हैं। प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है, इफ यू लुक हियर, तो दैट इज 16 मिलियन। 16 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, हमने पिछले फार्मूला में भी यूज किए हैं, दैट आर 20 मिलियन। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.80। तो initially we calculated earning per share, that earning per share is 0.80, then we put into this formula price earning ratio को calculate करने के लिए 0.8, okay sorry, अगर हम अपने टेबल की तरफ देखें तो we'll realize के हमारे पास अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया है। शेयर प्राइस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। शेयर प्राइस इज गिवन इन द रो नंबर 3, $10 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट की है 0.80। द आंसर इज व्हाट इज द आंसर, 12.5। अच्छा, 12.5. The earning per share and price earning ratio in the previous year was 11.67. That has been slightly increased to 12.5. That shows the confidence of the shareholders on the business has increased a little.